Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is vaibhawsiddhart here. So I hope you are doing great. इस वीडियो में हमने एक ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट किया था जो आप पीछे देखने वाले हो उस ग्रुप इंटरव्यू में क्या क्या हुआ. बट अब हमारा मॉक इंटरव्यू सेशन थर्ड राउंड के लिए स्टार्ट हो चुका है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई मॉक इंटरव्यू तो बहुत कम ही स्लॉट्स बचे हुए हैं यार. जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से जल्दी से एनरोल करो. और अब चलते हैं हम अपने मॉक इंटरव्यू की तरफ. थैंक यू सो मच. इस बार ही हो जाना है होपफुली. अरे होने का 100% गारंटी है. थोड़ा सा अब विराज तुमको ये करना है ना, थोड़ा सा कि थोड़ा अपने इस पे माइक्रो प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि उनका सारा क्वेश्चन का राउंड बहुत अच्छा जाता है, बट माइक्रो प्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम हो जाता है उन्हें. कॉन्फिडेंट था कि मुझे लगता था कि ये डेफिनेटली सेलेक्ट होने वाला है. मतलब मैंने इससे बोल भी दिया था कि हाँ हो जाएगा, तो बट क्या कर सकते हैं. थर्ड राउंड में देखते हैं यार. क्राइस्ट वाले काफी अनप्रेडिक्टेबल है. यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग लाइक दैट, यू नो. यस ट्रू. भैया नारसी का रिजल्ट कब आता है? हाँ, नारसी का कुछ आइडिया? एक्चुअली मुझे नारसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट तुम अगर बोलोगे तो कुछ दोस्त हैं नारसी में, थोड़ा आज उनसे कंसल्ट कर सकता हूँ. आप मुझे एक बार बता देना प्लीज. हाँ तुम, बिकॉज मैं सेकंड अटेम्प्ट का उसी हिसाब से शेड्यूल करूंगा ना सर. अच्छा हाँ श्योर कर सकते हो. ठीक है, आदि रेडी. हाय आदि. Yes sir. ओके सो व्हिच कोर्स? BBA. बी. अच्छा BBA. अच्छा, मैंने तुम्हारा लिया था ना, एक मॉक लिया था ना तुम्हारा. हाँ. ओके Yes. तो गाइस थोड़ा स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अभी तुम्हारे सीनियर्स नहीं आए हुए हैं, थोड़ा मैं उनको देख लेता हूँ कहाँ है वो. तो तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले सबका मैं एक एक इंट्रोडक्शन सुन लेता हूँ, क्या क्या इंट्रोडक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हर्ष से. हर्ष, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हर्ष प्लीज. Good morning, sir. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. I, Harsh Dalmia, hail from the city of Joy, Kolkata, West Bengal. I did my schooling from Babasco School, Lilwa. I am a quick learner and really enthusiastic about sports. I have a passion in management in general. I secured a CGPA of 8.5 in my class 10th, after which I opted for commerce as a stream. My hobbies include playing cricket, table tennis and running. I also like cooking during my free time. Thank you. Thank you हर्ष. Okay, so let's move. सर Yes, you can ask. एक चीज मैंने जो गलती की थी, इट वाज कि मैंने इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबीज में कुकिंग बोल दिया था. एंड देन उन्होंने मुझसे कुकिंग के बारे में ये पूछा था, व्हाट टेक्निक्स डू यू यूज फॉर कुकिंग. और एज सच मैं कोई स्पेसिफिक टेक्निक यूज नहीं करता, तो हॉबीज सोच समझ के बोलना. Yes. हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुमसे तुम्हारे हॉबी के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो तुम जिस चीज से फैमिलियर हो ना 100%, सिर्फ वही बोलना है तुम्हें. ओके, कि तुम उसके बारे में कुछ बोल भी सको अगर वो लोग कुछ भी पूछते हैं. ओके. और एक और चीज, अपनी झूठी तारीफ करो भर के. मैंने नहीं की थी, ये मेरी गलती थी. यस. अच्छा, जानते तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में खूब डालो, कुछ भी डालो. जैसे मैं था, जिसमें मैंने दिया हुआ था अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, मैंने जो नहीं किया था वो भी डाला हुआ था. आई एम द पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, सो आई ज्वाइन एस मेनी एनजीओज. हिज नेम इज हमारी दोनों एनजीओ. सिर्फ एक वैलिड नेम होना चाहिए तुम्हारे पास. ओके, जैसे अभी तुम सुनना, अभी जो सौम्या का इंट्रोडक्शन सुनना, इसका कितना अच्छा है. मतलब मैंने कल इसका मॉक लिया था. ओके सौम्या, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Okay, everyone. Okay, so I need to get formal, right? Good afternoon. My name is Soumya Tiwari and I'm basically from Patna, Bihar. Currently, I'm pursuing my senior secondary education from Notre Dame Academy and have opted for humanities stream. Throughout my school life, I have been a progressive student and have shown a fair interest in co-curricular activities. I have participated in various debates and public speaking competition and have secured medals in most of them. I like reading novels and my favorite author is Colleen Hoover. Inspired by her, I have recently began to write on a website called Article Alley. Sorry. I am getting nervous. It's all right. Oh, can I read? I'm going to read. Start again. Okay. It is start again. Good afternoon, everyone. My name is Soumya Tiwari and I'm basically from Patna, Bihar. Currently, I'm pursuing my senior secondary education from Notre Dame Academy and have opted for humanities stream. Throughout my school life, I have been a progressive student and have shown a fair interest in co-curricular activities. I have participated in various debates and public speaking competition and have secured medals in most of them. I like reading novels and my favorite author is Colleen Hoover. Inspired by her, I have recently began to write on a website called Article Alley. In my free time, I like making scrunchies and I have an online market. I'm deeply compassionate towards poor section of society and as a result, I have made myself a core member of 2 NGOs, namely Fatima Aegis Foundation and Bhuri Foundation. My compassion also links to my profession choice, and that is journalism, as I believe it helps in betterment of society.
So that's all from me. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity. I'm humbled. Too good, yeah, Soumya. Thank you so much. Let's move to the Viraj. Viraj, introduce yourself, please. Ravi. So Ravi, are you there? Yeah, I'm there. Yeah. So Ravi is basically from Tamil Nadu. And so Ravi, can you start your camera? So hello, Ravi. 1 second, right? Yeah. Yeah, I'm there. 1 second. Okay, Ravi. Yeah. So which course you are applying for the Christ University, Ravi? So I'm applying for 2 courses right now. One is BA Economics, Political Science History, then BA Economics, Political Science, then Sociology. Okay, sociology. Too good. Okay, Ravi. So introduce yourself. Okay. जितना आता उतना करो. Yeah. Okay. So happy afternoon to one and all present here. So first of all, thank you for giving me an opportunity to introduce myself. So my name is Roj Ravichandran and I am 17 years old. I'm from Tamil Nadu, Erode, and currently studying at the Indian Public School. So coming from a family background, we are 4 members, 3 members including me, my father and my mother, and where my father is a businessman and my mother is a household. So I have done my 12 years in the Indian Public School, pursuing science course in it. And since my strengths are I'm self-motivated, hard worker, critical thinker, and many more. And weaknesses are that I'm a bit lazy, and my hobbies are like traveling, viewing, and that Okay. much only I prefer. Okay. So why did you say that as your weakness is you are lazy? Okay. Yes. Okay. Thank you, Ravi. Let's move to the Adi Reddy. Adi Reddy, are you there? Yeah, Yes, sir. Adi. थोड़ा जो कैमरा को Hello थोड़ा everyone. थोड़ा कैमरा को नीचे, या और नीचे. Hello everyone. No. Yes. और ऐसे करो, ऐसे. हाँ. तो अपन को थोड़ा होता है ना कि जो होता है जो कैमरा का सेटअप भी उसको देखना है कैसे हम लोग को बैठना है रियल इंटरव्यू में, या. Okay, Adi, please introduce yourself. Hello everyone. I'm Lakshya Rao from Raipur, Chhattisgarh. I've studied from DBS Chhattisgarh. Sorry. Sir. It's Sir, all can I right. repeat myself? It's all right. It's all right. So this is a group session. Hello everyone. I'm Lakshya Rao from Raipur, Chhattisgarh. I studied my class 10th and class 12th from DBS Raipur. And I'm an international badminton player. I've also achieved the title of best badminton player in Raipur, Chhattisgarh. Yes. Okay, A Adi. part of my extracurricular activity. Wait, Adi. देखो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं. ओके. आई थिंक मैंने तुम्हें बताया था बट तुमने उसको ध्यान नहीं दिया. सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सर. सबसे पहले बोलो, so thank you for giving me a great opportunity or nice opportunity to introduce myself. Okay, then sir, my name is Adi. जो भी रेडी है वो बोल सकते हो. Sir, I have done my 10th in this school and I am pursuing my 12th to this school. Okay, so then you go to the sir, I have done many extracurricular activities. Sir, my extracurricular activities are, and you told your extracurricular activities. ठीक है. उसके बाद अपना हॉबीज बताओ, अपने वीकनेसेस को बताओ. नहीं, वीकनेस को यहाँ नहीं बताना है, उसके लिए एक जो अलग क्वेश्चन बनता है. ओके, उससे तुम्हें अपना बताना है कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, एंड देन दैट्स ऑल. ओके, इंट्रोडक्शन में इतना ही होना चाहिए. एंड मुझे मिनिमम इंट्रोडक्शन का लेंथ चाहिए 1 मिनट. ठीक है, तो जिसका भी 1 मिनट से कम है वो थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मॉडिफाई करो. जैसे मैंने जो देखा सौम्य का 1 मिनट प्लस था, बहुत अच्छा था. आदि तुम्हें भी थोड़ा सा होता है कि इंट्रोडक्शन सही करना पड़ेगा क्योंकि तुम भी जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ओके, थोड़ा अच्छे से करना है. ओके, तो मैंने जो तुम्हें लिखवाया था वो बोलो अब. ठीक है, आई विल गिव यू अनदर चांस फॉर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आदि. Yes. First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. I am Lakshya Rao from Raipur, Chhattisgarh. I have completed my class 10th and class 12th from DBS Raipur. And I have always been
I'm social person. Sir. I'm an international badminton player. I've also achieved the title Best Badminton Player of Raipur. And a part of my extracurricular activity, I've also been a social person. I've participated in many social workers campaigns such as Hamari Dunya NGO, Yes. blood donation for rural people, and providing infrastructure facilities to rural and backward areas. Donation for infrastructure facilities for rural and backward areas. ओके, थैंक यू आदि। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो सो नेक्स्ट ग्रुप इंटरव्यू में मैं देख लूंगा, ठीक है। थैंक यू आदि। ओके, सिंग रॉक्स, आप मुझे ये बताओ, अच्छा ये कहा ना यार, लोग अपना रियल नाम लगा के आया करो, ठीक है, और ऑल्सो रियल प्रोफाइल, या जो प्रोफाइल नहीं लगा कुछ भी लगा के आ जाते हैं। ओके, अच्छा कौशिक, आर यू देयर? Yes, sir. या so introduce yourself, Kaushik. Thank you, sir, for giving me this pleasant opportunity to introduce myself. So, I Kaushik Dubey. I basically born and brought up from West Bengal, Bakuda, West Bengal. Currently, I am pursuing my 12th from MDFDB Public School, Bakuda. And from the same institution, I am pursued my 10th also. And so basically, I am from a nuclear family. And my strengths and weaknesses, my strengths are I am very focused, hardworking, and I'm a flexible type of person. I can adjust any situation, in any of my situation, and I believe in discipline. I am very disciplined. And one of my weaknesses are sir, I have a problem with interaction with different types of people, and I am make it correct to different type of normal situation or normal conversations with my friends, or different type of conversation in social media. Um, and sir, I also have interest on sports. I have played interzonal level of cricket and national level in volleyball. And both in the volleyball team, I have the captain of my team. And so from here, I understand that I have some qualities of leadership. Okay. And sir, Okay. So according to your introduction, and as you that tell me, no, wait. So according to your introduction, as you tell me, as you are as captain of your team. So do you know so how to manage the team as a leader? yes, sir, basically as a leader has basically the difference. There are two different, one a manager and a leader. So I basically prefer a leader because a leader takes all of the members of a team into a uh, same level. So every of it, a leader takes every of his players' responsibility to Yes. grow up on each quality. So I believe in that, and I believe in team spirit. So I basically as a leader, I provoke all of my team members to play as best as they can and to support the team in by their performance. Okay. So thank you, Kaushik. And guys, so this group session is only for boost your confidence. तो इसमें थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेना कि मुझे उतना अच्छे से नहीं आ रहा है बोल। ओके, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोगों का थोड़ा सा ये होता है ना कि बूस्ट हो, क्योंकि तुम यहाँ पे सिर्फ तुम नहीं बोल रहे हो, यहाँ पे सुनने वाले बहुत सारे हैं, बहुत लोग तुम्हारे स्पीकिंग को होता है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि अगर किसी को भी किसी के भी आंसर पे कोई डाउट होता है, अगर मैं उसे नहीं पकड़ पाता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो आस्क इस क्वेश्चन। ओके, अगर मैंने किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछा, अगर किसी को लगता है कि हाँ किसमें मैं कुछ जो ऐड कर सकता हूँ, ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली अपने कैमरा को स्टार्ट करेगा एंड मेरे को बताएगा, या वो बोल सकता है सर मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब सबका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, तो अब मैं एक एक करके एक जनरल क्वेश्चन सबसे पूछने वाला हूँ, बट ये So जनरल मेरा इंट्रो नहीं, अब अभी तुम्हारा नहीं लेने वाला हूँ, अभी रुको, अभी एक और राउंड जो खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इंट्रो होता है विराज से नहीं लेने वाला हूँ। सो विराज से मैं पूछने वाला हूँ, व्हाट इज द कोर वैल्यू ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी? So the core values of Christ University are faith in God, moral uprightness, love of fellow beings, social responsibility, and pursuit for excellence. Okay, thank you, Viraj. So anyone who want to attempt this question? Wait. Okay, so welcome Raghav, Jan.
जलान ना, सो राघव जलान। हाँ जलान भैया। तो सबको ये बता दूं कि यहाँ के राघव बीबीए, अभी तुम्हारा सिलेक्शन मेन कैंपस में हुआ है ना राघव? हाँ हाँ मेन कैंपस में राघव जो होता है सेलेक्टेड है, और कोर्स भी है बीबीए के लिए, सो फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में। ओके राघव, या आई एम राइट? हाँ यस भैया। ओके, तो राघव अब आ चुका है। थोड़ा सा मैं इन लोगों से कुछ होता है जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो थोड़ा सा एकेडमिक क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन तुम इन लोगों से पूछ लेना। ओके, यस, ओके। सौम्या, आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू सौम्या। ओके सौम्या, सो Yeah. okay, why did you choose this course? I I chose journalism because I think it goes well with my personality, and I share all those personality traits which are required in journalists. Whenever I see a reporter covering any event, whether it be political, economy, sports, food, lifestyle, etc., my attention gets very easily attracted to them, and I'm very curious about what is happening around. I like being connected and be a part of change. Journalism appears to me as a perfect field to serve this craving curiosity of mine and give me a sense of doing something meaningful. So I think journalism is the best for me. Okay, thank you, Soumya. Okay, so let's move to the Harsh. Harsh, please open your camera, Yes, yeah. if possible. Okay, okay. So, your question is, so how did you answer if Christ University selects you? If Crashman selects me, I would be really happy and would thank God for selecting me, and I would be really happy because my hard work and determination gave me a fruit to be selected in the Crash University, and be really humble about it. Okay, thank you, Harsh. So let's move to the Viraj. Now, Viraj, you introduce yourself. Good afternoon, sir, and thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Viraj Thakkar and I come from Noida, Uttar Pradesh. I completed my class 10 from Lotus Valley International School and I'm currently pursuing my class 12th from the same institution. So throughout life, I've been a sportsman and I've also participated in various co-curricular activities such as inter and intra-school competitions for volleyball, badminton, and cricket, etc. I also won the best player award consecutively for 2 years for volleyball, and I also led my school team in the CBSE clusters for volleyball as well. And I've also been into public speaking, which is indicated by the number of MUNs that I've participated in, and I've also won quite a few awards for MUNs as well. And as of now, the only goal I have is to get into Christ main campus. Okay, so thank you. Okay, Raghav, can you ask some question to these guys? Yeah. ओके, किससे पूछना है भैया? सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ एडमिशन तुमने लिया, और उसके बाद किसी से पूछ लो. ओके. Okay, so hello guys, my name is Raghav Jalan. I am currently studying in class 12 from Patna, Bihar, and I am selected at Christ Central Campus at for the course BBA Finance and Accountancy. ओके. और मैंने भैया का ही मॉक इंटरव्यू दिया था. और देखो आज Bro, did you get selected in the first round or in the second round? No, in the first round, bro. Oh, okay. Congrats. Thanks, भाई. ओके राघव, तो तुम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन. ओके. Are you there, Raghav? I think Raghav is just a network problem. ओके, तब तक मैं जो किसी और से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. ठीक है. आज कौशिक. या कौशिक, are you there? Yes, sir. Okay, so what is your weaknesses? My weaknesses are first of all, I have one problem with interact with strangers or some people, and I am make it correct by doing regular sessions with my friends or regular conversations with my friends or in other strangers in social media, and to make my weakness understand. Okay, so thank you, Kaushik. Let's move to Ravi. Ravi, are you there? Yeah, I'm there. Okay. So why should we select you, Ravi? Since I have put all my hard work and dedication through to this interview and the micro presentation, so I am worthy of joining Christ University, I think so. And I have got more than 85% in my 12th grades and many awards from MUN and sports, so that I think I am worthy of joining Christ University. Okay, thank you. Adi, ready?
So what is the core value of Christ University? So this question is repeated, but I think you. Hi Adi, are you there? Okay, Adi is not here. Okay. सो अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, जो सबको मैं एक माइक्रो प्रेजेंटेशन का टॉपिक देने वाला हूँ। सबका जो माइक्रो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक होगा सबका डिफरेंट होगा एंड सबको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और मैं एक एक करके सबका नाम लूंगा एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन का टॉपिक भी दूंगा। सो वेट थोड़ा सा, मुझे कुछ माइक्रो प्रेजेंटेशन का टॉपिक देखना होगा। ओके, तो हर्ष, सो हर्ष को मैं जो टॉपिक देना चाहूँगा, वेट हर्ष, हाँ, सो डिजिटल मार्केटिंग। ओके हर्ष, तो तुम थोड़ा सा इस पे होता प्रिपेयर करो अभी। सेकंड सौम्या, सौम्या को मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ, सो राइट टू प्राइवेसी। ओके सौम्या, Okay, sir. okay, you're right. Okay, let's move to Viraj. So Viraj, I'll give you topic of so Russia and Ukraine war. Okay, Viraj. Okay, sir. Yeah. So are they ready? Are you there? Yes. Okay, so I will give you one topic, financial budget 2022. Okay. Okay. Got it. So let's move to the Ravi. So Ravi is a new there. So I will give you one simple topic to the Ravi. Ravi, your topic is the startup India. Okay, the startup India. You know. हेलो भैया, वो सॉरी डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। हाँ, अब ठीक है। so मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है तुम्हें इसलिए। हाँ वही इंटरनेट अब ठीक है, अब स्टेबल है। अब स्टेबल है ना? तो एक काम करो, मैं तो अभी सबको हाँ माइक्रो प्रेजेंटेशन अभी जो टॉपिक सबको दे रहा हूँ, सब अपना माइक्रो प्रेजेंटेशन हाँ जो टॉपिक होता है अभी सब अपना लिख लो, ठीक है? अभी 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 राघव आया हुआ है तो ये कुछ तुमसे जो क्वेश्चंस पूछेगा अभी सबको लिख के रखना है, ठीक है? वो मैं तो लास्ट में पूछूंगा। एंड जो कौशिक को मैं देना चाहूंगा माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक, स्कैम इन इंडिया। ओके कौशिक, स्कैम इन इंडिया इज योर माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक। Okay. आई होप कि सबने लिख लिया हो। ओके, अब राघव तुमसे कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा, जो भी एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बताओ, बीबीए के लिए कौन कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे आया है? बीबीए और इकोनॉमिक्स वगैरह। Yes, sir. BBA. मैं बीबीए के लिए हूँ। अच्छा, Yes, भैया मैं भी ऑनर। ओके ओके राघव, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, एनी आस्क क्वेश्चन, एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चन। Okay, so my question is to Kaushik that what are the golden rules of accountancy? Sir, I don't have enough knowledge about this because in my class 12th I don't study accountancy. I don't have this one. Oh, you are from a different stream. Yes, yes. अच्छा, तो कॉमर्स वाले कौन कौन है इधर? भैया आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, so चलेगा? मैं हूँ कॉमर्स वाला। हाँ बोलो ना भाई। Debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, and debit all expenses, credit all income. Yeah, right. Okay. Okay, so what are the different methods of depreciation? Anyone know? Are you talking about the straight line method or वाला? हाँ वही वाला। अच्छा, तो one is the straight line and units of production वाला and I guess some of the years. No, double declining it's वाला। actually it's two methods, straight line method and WDV method. Okay. double declining। Okay, so I can ask from economics also. Yes. Yes, sir. Okay, so what is law of demand? It is the value of total expenditure on goods and services during an fiscal or accounting year. No, that's not law. It basically states that price and quantity have an inverse relationship. Yeah. It basically says that a higher price consumers will demand a lower quantity of goods. Yeah, that's right. Okay, so now what are the kinds of activities in cash flow statement? Operating, financing, investing activities. And what are the items included in each of them? Operating a profit before tax, investing sale of fixed asset and machinery, and financing issue of shares less redemption of shares.
Okay. So where will you record income tax? Income tax, provision for tax account. In Uh, operating activity, it will added in profit before tax and interest. yeah. Okay. So if my trade receivables are increasing by 20,000, what will be the treatment in cash flow statement of that? It will be recorded in Negative. working capital adjustment. It will be minus. It will be Minus. less 20,000. Increase in Yeah. asset will be less. Yeah. Right. Okay. Uh, and now. Okay. So. mm how will you record the entry of interest on debentures? What is the Interest on entry? debenture. Interest on debentures, yeah. Non-operating and non-cash income. No, no. What is the journal entry for that? Oh, okay. Bank account debit to debenture application. Sorry? Bank account debit to debenture application. No. अच्छा बैंक लोन वाली एंट्री की बात कर रहे हो क्या? No, interest on debentures wali entry. So it's basically interest on debentures debit to debenture holder account. Okay. So what are the different ways of writing off loss on issue of debentures? Like from which sources we can write it off? Anyone know क्या the मतलब answer? क्वेश्चन रिपीट करिएगा ना? What are the different ways of writing off loss on debentures? Like from where can we make up for that? Pro rata. Uh, pro rata तो नहीं है. No, I'm actually asking the sources. So basically, the sources are the capital reserve, the security premium reserve, and profit and loss statement. These three sources are by which we can write off the loss on debentures. Uh, okay, so yeah, that's all. Yeah. ओके सो थैंक यू राघव. ओके गाइज, अगर राघव से कोई भी क्वेश्चन है अभी तुम्हें जैसे जो CUET से रिलेटेड या सेंट्रीफ्यूज वगैरह से रिलेटेड, तो अभी तुम पूछ सकते हो. ओके Bro, how many questions did you attempt in your CUET? Approx 90 to 100 questions. इससे ज्यादा तो मैंने कर दिया था, मेरे को रिजेक्ट कर दिया. ओ सेकंड राउंड में हाँ. नहीं बेसिकली मैंने सुना है कि मतलब तुम्हारे 100 क्वेश्चंस सही होने चाहिए, 90 to 100 सही होने चाहिए. तो उससे तो मतलब तुम एक सेफ साइड पे हो जाते हो. And like, what was your topic for micro presentation in the main interview? My topic was that they didn't give me a specific topic, but they asked my interest. So in that micro presentation, I got a little lucky. So I Okay. prepared for my financial budget. So I told my interest is financial budget. So I spoke on that. So did you like fumble in the interview? जैसे मेरा micro presentation में fumbled, because of which I think मेरा selection हुआ. Little bit fumbling, but you should be just confident. Even if you fumble little bit, that does not matter. But your answer should be confident, I think. Okay. You shouldn't Thank be you. nervous in that. Yeah. Thank you, bro. ओके Hmm. ओके हर्ष, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन. हर्ष. हर्ष. नहीं भैया वो ओके. हर्ष और दिया. यस यस आदि. राघव. हाँ भाई. BSc के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे क्या? बिजनेस स्टडीज क्या BBA के लिए ऑप्ट किए थे तो? मुझे तो नहीं आए थे, लेकिन मेरे दोस्तों को आए थे कुछ BST से रिलेटेड. लाइक व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, ऐसे ऐसे करके. सो BST के मतलब बेसिक टॉपिक्स कर सकते हो, लाइक व्हाट इज मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, ऐसे करके जो बेसिक वगैरह मैनेजमेंट का डेफिनेशन, ये सब BST में कर लो. ज़्यादा उतना BST का नहीं. BBA में बेसिकली अकाउंट्स से ही पूछते हैं ज़्यादा, अकाउंट्स और BST से थोड़ा बहुत. ओके अच्छा भैया मुझे क्वेश्चन था. या क्वेश्चन, गो अहेड. राघव भैया. हाँ हाँ भाई. हाँ भैया मैं थोड़ा अलग स्ट्रीम से हूँ, तो मैक्सिमम मतलब कौन सा स्ट्रीम मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब अगर कोई आर्ट्स या मतलब कोई साइंस बैकग्राउंड से हो तो उसको भी ऐसे मतलब अकाउंटेंसी या ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं क्या? आर्ट्स मैंने तो जहाँ तक सुना है, साइंस में तो तुमको साइंस से ही पूछेंगे, बट बेसिक्स तुमको अकाउंट्स का आना चाहिए. अकाउंट्स का बेसिक, लाइक 11th में जो भी अकाउंट्स का मेन लेजर, पोस्टिंग वगैरह की कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजैक्शन का, ऐसे अकाउंट्स का बेसिक आना चाहिए. बस बाकी तो तुमसे शायद तुम्हारे स्ट्रीम से रिलेटेड पूछेंगे. अच्छा, और सीयूईटी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंटरव्यू? मतलब अगर कोई सीयूईटी थोड़ा बुरा गया और इंटरव्यू मतलब ठीक ठाक नहीं करके नहीं, लिख दिया तो वो इंटरव्यू उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
अच्छा, जो कौशिक को ये प्रॉब्लम था, सो कौशिक ने मेरे को पर्सनली फ़ोन किया था और वो बोला था कि मैं बीबीए इन जनरल के लिए मैंने डाला है, बट इसके अलावा भी मैं एक और बीबीए के कोर्स के लिए डालना चाहता हूँ। हाँ हाँ तो तुम राघव किस कोर्स के लिए इसको प्रेफर करना चाहोगे? सो जैसे कि क्राइस्ट में तो बहुत सारे बीबीए हैं, 7-8 तरीके के हैं। सो अगर मतलब एसीसीए का जो बीबीए फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, एसीसीए करना है अगर, तो बीए फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी कर लो उसका, तो उसके साथ वो है। और अगर नॉर्मल लाइक कुछ श्योर नहीं, बीबीए जनरल तो किया वही है। और 2-3 के लिए और करना है तो एक बीकॉम प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है उसका, वो सीमा से टाई अप है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, बीकॉम बीकॉम अच्छा प्रोफेशनल बीकॉम। भैया भैया हाँ आईबी मतलब फाइनेंस और इंटरनेशनल हाँ फाइनेंस और आईबी हाँ हाँ, उसमें भी वो कर मतलब सकते हाँ भैया बोल रहे थे मतलब बाबा भैया बोल रहे थे मतलब ये बहुत मतलब अच्छा कोर्स है, ये मैं देख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसमें भी मतलब फॉर्म फिल कर दूँ। लेकिन कौशिक हैं। हाँ ऐसा है ना बीबीए। कि ये वाला जो कोर्स हाँ बहुत ट्रेंडिंग में है और इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो तुम एक हिसाब से देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि आई थिंक राघव की ये कोर्स के लिए बहुत स्टूडेंट आए हैं हमारे पास, एनरोल किया है सिर्फ ये कोर्स के लिए। किस किस कोर्स के लिए भैया? जिस कोर्स में तुम हो ना, जो फाइनेंस एंड सेंट्रल हाँ बैंक ऑफ हाँ बिजनेस, बहुत ट्रेंडिंग में हाँ, है। वो ट्रेंडिंग है, हाँ। तो ऐसे कोर्स में जाओ ना जहाँ पे कंपटीशन कम है। अभी ऐसा है कि थर्ड राउंड में तुम जा चुके हो, जो पहले से सीट्स बहुत कम है, और उसमें ज़्यादा कंपटीशन है। तो तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कंपटीशन किस चीज़ में कम है। तो अगर देखो तुमको बाद में जाके तो एमबीए करना ही है, ये तो सबको पता है। हाँ हाँ तो तुम क्यों ना तुम ऐसे कोर्स के साथ जाओ जहाँ पे कंपटीशन कम है, क्योंकि जिस कोर्स में राघव गया है अभी के सो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा सीट्स होंगे। राघव, यस आई एम राइट ना? हाँ भाई। यस। तो थोड़ा ये थोड़ा सा यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा भैया सोचो। सीट्स तो मेरे हिसाब से है, जैसे मैंने आपको बताया था, डैड की बात हुई थी, तो आपको पता है उन्होंने क्या मांगा था। यस, वो तो आई तो गेस मैनेजमेंट। ओवरली अच्छा इंटरव्यू अगर आप दोगे तो हो जाएगा थर्ड राउंड में, वरना फिर वही होगा जो मेरे साथ हुआ। वही। थर्ड राउंड में हमको लगता है कि अगर एंट्रेंस टेस्ट में अबव एवरेज परफॉर्म करो और इंटरव्यू में थोड़ा ठीक अच्छे, ठाक, हाँ। तो हो जाना चाहिए। अच्छा, हो नहीं जाएगा। भैया हम्म। मतलब मैं ऐसा भैया मैं एज सीबीएसई स्टूडेंट हूँ, मेरा बोर्ड्स भी आ रहा है मतलब मेरा बोर्ड्स भी दो मतलब इसमें 6 में से। तो मतलब दोनों सीयूईटी प्लस बोर्ड्स तो दोनों तरफ मतलब कंसेशन नहीं हो रहा ना, तो इसलिए मैंने पूछा कि अगर सीयूईटी थोड़ा बुरा गया और इंटरव्यू मतलब ठीक ठाक गया कॉन्फिडेंट, तो मतलब सिलेक्ट होने का चांस है या मतलब। हाँ, अगर जैसे मान लो इंटर सीयूईटी थोड़ा गंदा गया तो इंटरव्यू में तुमको फोड़ना पड़ेगा फिर उस केस में। एकदम मतलब एकदम पूरा कॉन्फिडेंट, एंड यू शुड नो ऑल द आंसर्स लाइक, या। Bro, हाँ भाई। since I'm taking triple major, bro, so in interview, from which subject would maybe they may be asking questions? सॉरी, क्या बोला तुमने? So I am taking BA Arts in Economics, Political Science, and History, bro. So in interview, from which subject maybe they may be asking questions? Do you यू know? आर फ्रॉम विच स्ट्रीम? Science stream, bro. So yeah, the core basically you are from any stream, but in the course in which you are applying, you should know the basics of that course. You should know what subjects are they going to teach in that course, and you should know the basics. Like you are applying in arts or history, so you should know the basics of 11th of history, and you should simultaneously know the subjects. The you should have the knowledge of your subjects also, your stream. So they can ask both, because basically, like, obviously you are applying to the arts courses, so you should have some knowledge about that. So that's the main point of the interview. Sir, but bro, in history, how can we know basics? That I'm having confusion. You should know, I think 10th में तो सबने पढ़ा है, 10th का पूछ सकते हैं। हिस्ट्री का मुझे उतना आइडिया है नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे एक बेसिक क्राइटेरिया पता है कि ये लोग कोर्सेज में कैसे इंटरव्यू में पूछते हैं। रवि, अगर दे शुड आस्क ऐसे एनी क्वेश्चन, ओके। आई थिंक कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट सबसे पहले ये तुमसे जरूर पूछेंगे कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा, अगर हो सकता है इंटरव्यू, तो तुमसे पूछें व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट ऐसे। उसके बाद तुम अपने जो प्रीवियस में तुमने जो भी स्ट्रीम चेंज किया वहां से अगर बोलोगे तो वहां से पूछेंगे। बट अगर तुम जिस कोर्स के लिए जा रहे हो, तो दे विल डेफिनेटली आस्क सम क्वेश्चन, सम बेसिक्स क्वेश्चन फॉर दिस सब्जेक्ट, ओके। कुछ ना कुछ तो पूछेंगे अच्छा भैया ही। मुझे तुम्हें इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि भैया तुमने कुछ तो पढ़ा होगा ना। सो दे विल आस्क सम बेसिक्स क्वेश्चन, या। यस। Okay. Okay. या। भैया हेलो। यस। अच्छा मतलब जब मतलब वो लोग पूछेंगे कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स और वो भी सब्जेक्ट डू यू लाइक, तो अगर कोई स्टूडेंट मतलब ऐसा सब्जेक्ट बोले जैसे इंग्लिश लिटरेचर या मतलब रीजनल लैंग्वेज जैसे बंगाली मतलब ऐसे, नहीं बोलना, तो वरना तुम्हारे एकेडमिक से पूछने लगेंगे। इंग्लिश हिंदी तो कभी नहीं बोलना राघव। अगर ऐसा किसी ने बोला तो क्या होगा उसके साथ?
हाँ, इंग्लिश हिंदी तो मैंने सुना है, मतलब बहुत नहीं बोलते हैं most of the बच्चे तो, लेकिन अगर किसी का जेन्युइनली नहीं इंटरेस्ट है तो भैया, लाइक अगर अगर मतलब उसको कोई बोले, कोई सी कोई कोई देखो, हाँ बोले कि नहीं नहीं, अगर मैं मुझे, मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर तुम बोलोगे भी ठीक है, इंग्लिश बोलोगे, तो उनके पास एक वाइडर स्कोप हो जाएगा। लाइक वो तुमसे पूछ लेंगे इंग्लिश में, लाइक तुमने उनको ऐसा लगेगा महारत हासिल कर चुके कि ये कौन बच्चा आ गया इंग्लिश बोल रहा है जो, तो उनका स्कोप बढ़ जाएगा। जैसे तुम अकाउंट्स अगर बोलते हो तो तुम लिमिटेड है, ट्वेल्थ का ही वो पूछ सकते हैं। इंग्लिश बोल दोगे तो लाइक हो सकता है पूछ लेंगे इस बुक के ऑथर बताओ, या कुछ वैसे इंग्लिश से रिलेटेड रूल्स, ग्रामर के रूल्स पूछेंगे, तो उनका स्कोप बढ़ जाएगा, जहां तक मुझे लगता है इंग्लिश अगर मगर बोलो। भैया कोई बच्चा अगर बोलेगा मुझे तमिल पसंद है, मुझे बंगाली पसंद है, तो ये तो नहीं, नहीं नहीं, वो सब्जेक्ट्स की बात हो जाती है वो ना, वो सब्जेक्ट, तुम्हें हाँ, लैंग्वेज लैंग्वेज की थोड़ी ना तुमने पूछ। बात वहाँ पे छेड़ी। अगर 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 तुम बोलते हो सर आई लाइक तमिल, तो वो भी लोग अगर कोई अच्छा से होता है कि तमिल जानता होगा, तो वहां से तो वो कुछ नहीं पूछ सकता है ना, क्योंकि अगर हम, तमिल तमिल तो रीजनल हो गया ना, हाँ आप कुछ हाँ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट लेके चलो। हाँ, वो रीजनल हो गया ना। एंड जो तमिल इज नॉट अ सब्जेक्ट, ओके। अगर अगर मैं बोल दूं हिंदी, तो हमारा सारा इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला है, तो हिंदी में कैसे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन? तो वो और वहाँ जहाँ तक मुझे पता है बैंगलोर के इंटरव्यू को हिंदी आती भी नहीं है। आती भी नहीं है, यस। तो वो और सब ये सब तो बचपना वाला क्वेश्चन हो गया कि हाँ हिंदी बोल दो, इंग्लिश भैया बोल दो। या ड्रेस कोड क्या रहेगा इंटरव्यू में? ड्रेस कोड में क्या होगा? फॉर्मल टी ड्रेस शर्ट। कोड, हाँ फॉर्मल्स, मतलब अगर अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो ब्लेजर पहन लेना, टाई पहन लेना और वाइट शर्ट पहन लेना। मैंने तो ये मैंने पहन के, मैंने तो शर्ट टाई और नीचे बॉक्सर्स। हाँ नीचे कुछ भी नीचे चलेगा, कुछ भी नीचे तो चलेगा। मैंने भी बॉक्सर पहना, नीचे तो मैंने ही बॉक्सर पहना था ऊपर में, लेकिन अगर थोड़ा लाइक शर्ट शर्ट टाई तो बेसिक है, अगर और अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो ब्लेजर पहन लेना बस एक। अरे आज भी मैं होता हूँ मैं तो वही कि पहनता बड़े हूँ। बड़े कंपनी का इंटरव्यूज वगैरह देता हूँ, तो मैं भी वैसे ही करता हूँ। ऊपर जो भी ऊपर, नीचे कुछ नहीं भाई, बॉक्सर पे ही काम चल हाँ जाता है अपना। चलो, तो अभी मैंने सबको माइक्रो प्रेजेंटेशन दिया हुआ था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सौम्या से। सौम्या, सो व्हाट्स योर माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक? आर यू देयर सौम्या? सौम्या इज नॉट देयर। ओके, तो अब किससे पूछूं? ओके, सौम्या इज। ओके विराज, आज तुमसे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्स योर माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक? So my topic for micro presentation is the Russia-Ukraine war. या, So I would like to गो start. अहेड। या, And before starting, I would like to say that war is not the answer for anything, and violence is not an option. So matters can be sorted diplomatically as well. And now for the agenda. So Russia basically invaded Ukraine on 24th February 2022, and it also was the beginning of the Russia-Ukrainian war. And the conflicts had basically started in 2014 due to the Ukrainian Revolution of Dignity, and this invasion of Russia on Ukraine has also caused the largest refugee crisis since the World War II, in which more than 5.1 million Ukrainian people had to leave the country because of the ongoing violence, and which is basically the quarter of the population of Ukraine. Uh, and if we talk about the time in 2014, in which Russia had annexed the Crimea, and many Russian separatists had seized the southeastern part of the Donbas region of Ukraine. And after that violence in 2021, Russia also began a large military build up along the border of Ukraine, amassing about 190,000 troops with equipment around the border of Ukraine. And the Russian president Vladimir Putin also said that this is the most major army operation that Russia has ever conducted. And responding to this, many countries from NATO also opposed and said that Russia is trying to invade Ukraine and trying to take over the Ukrainian region, which the Russia diplomats refused till as early as 23rd February, that is just one day before the war. But on just one day after refusing the claims of not starting the war, they started the war on 24th February. Okay, thank you Viraj, too good, great. Yeah. Okay, so let's move to the Harsh. Harsh, what is your micro presentation topic given by me? My microphone topic was digital marketing. Yeah, so Harsh, start. Digital marketing is also known as online marketing. Digital marketing basically helps in promotion of brands to connect with potential customers using the internet and other forms of digital communication. Uh, Digital marketing is that component of marketing that is increasing, that is incorporated into the market and everyday life of the people. It extends to non-internet channels and
the basic digital needs of all of them. It had a change in traditional market, and the thing that matter the most for digital market is understanding the customer and media strategy. Um, Philip Kotler is considered the father of modern marketing. Thank you. I think your voice is not coming. Okay, okay, okay. It's all right, Harsh. Uh, let's move to yes, Shaumya. So what was your micro presentation topic? Hello, I don't know, my net is lagging. I'm sorry. My topic was right to privacy. Yeah, start. Okay. Right to privacy can be defined as choosing an individual where he/she chooses which parts of their lives they have to disclose to society. In India, the right to privacy is to constrict the government and private actions that threaten citizens' privacy. It has been included in the Constitution under Article 21. This will ensure the dignity of a person as mentioned in India's preamble. Without privacy, the citizens will be victims of brainwashing and propaganda. India is rapidly developing into a digital economy, so, cybersecurity and privacy have been an issue now. That is ID theft, fraud, illegal bank transfers, etc. Quite recently, Government of India had decided to ban certain apps as they were suspicious to leak data and hence could be a threat to our nation's security. According to me, right to privacy is an integral part of human lives, and therefore we should be wise as well as vigilant enough to protect it by not letting anyone, even though it is government, agencies, or anyone, getting involved in our confidential matters. So that's all I wrote. I couldn't Okay, gather much information about it. I'm sorry. okay. Thank you, thank you. That's too good. Okay, great. Okay, so let's move to the Kaushik. So Kaushik, what was your topic? My topic was scam in India. Yes, start Kaushik. Go ahead. Uh, yeah, basically, there are many scams like many scammers like Harshad Mehta and Nirav Modi, Vijay Malia. But I want to tell about Harshad Mehta. The full name of Harshad Mehta is Harshad Hansal Mehta, and he was born on 29th July 1954, and he was died on 31st December 2001 at the age of 47. And he basically done many scams like scam paper and bank receipt fraud. धीरे बात करो सनी. Okay, Kaushik. Not together. ओके, तो कोई बात नहीं. अभी अभी ऐसा है कि थोड़ा सा धीरे धीरे इसको बिल्ड करना है कौशिक, ठीक है. ओके, इट्स ऑलराइट. बट अगर अगर जो कहीं पे लैगिंग हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम लैग कर रहे हो, तो वहां पे उसका जो होता है एंडिंग पॉइंट भी ढूंढ लो, ठीक है. वहां पे एंड कर दो. ऐसे ही नहीं, बीच में ऐसे फंसना नहीं. ओके कौशिक, गेट इट. Okay. ओके, so let's move to the Adi. Ready? Yes. So what was your micro presentation topic? So economic budget 2022 Sri Lanka. Yes, my favorite topic. Okay, so go ahead. The financial budget in Sri Lanka 2022 has showed a rise in deficit, and it has also depleted the foreign exchange reserves and rise in prices, which had also led to increase in imports, uh, and it has not only affected the commerce, it has also affected the it not only affected the primary sector, it has also affected the tertiary, secondary, and other sectors of the economy also. Okay. A part of this pandemic has also played a huge impact in rising the fiscal deficit. Okay. Yes. Okay. Thank you, Adi. Ready? Adi and Kaushik, I think as you work on your micro presentation skills. Okay. थोड़ा सा जो टाइमिंग कम हो रहा है, मैं सबका टाइमिंग मैं देख रहा हूँ. आई थिंक इन दोनों में से जो तुम्हारा टाइमिंग थोड़ा सा लेस है, बट थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा. अभी अपन के पास जो टाइम भी है, तो हम इसे इंक्रीज भी करेंगे. ओके, so let's move to our last contestant, Ravi. So what was your topic? So my topic was about the startup India. Yes, start.
So, Startup India scheme is an initiative by the government of India for generation of employment and wealth creation. The goal of Startup India is development and innovation of products and services and the increasing employment rate in India. So, the benefits of Startup India scheme is simplification of work, finance support, and government tenders. So this scheme was launched by our Prime Minister Sri Narendra Modi on 16 January 2016. So this initiative simplifies the work for the new entrants in order to motivate them. So most of the startups that are started in India are patent based. It means the products that they produce are unique goods and services, and in order to register their patents, they have to incur a heavy cost, which is known as the patent cost, and since and there are many advantages due to this, but there are also challenges based on this, like that people think that generally startups are easy creating, but but in reality the execution of such plan needs more critical thinking and more guidance. So that much only I prepared till Too this time. too good, Ravi. Very good. Good performance. Okay, so I'll ask some question to political science. Okay, so Viraj, Soumya, and Ravi, are you ready? Okay. सर क्या बात चल रही थी मैं था नहीं. अच्छा, तो मैं थोड़ा सा academics क्वेश्चन अभी पूछूंगा पॉलिटिकल साइंस से, जिससे भी आता ओके हो सर. वो उसे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो राघव. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? एनीवन? Sir, agreements are basically promises that could be between two persons, be it friends or family, and contracts are basically agreements that are legally binding and have some conditions to it. Okay, thank you, Viraj. Let's move to Soumya. Soumya, so tell me something about article first. Soumya is not there. Sir, Article 1 is basically that India should be a union of states, and it also tells the boundaries of each state that India has. Okay, so thank you, so Viraj. Okay, Ravi, so what was your favorite subject? So science and mainly biology was my Okay, favorite. so biology is your favorite subject. So what do I ask into biology? Wait, I can. Sir, may I ask a Yes, question? yes, Yeah, Viraj. from Ravi. So anyone. Bro, as you told that your favorite subject is biology and your stream was science, so why have you opted for BBA? So I have not opted for BBA. I have opted for BA Arts, right? So since so I wish to try for UPSC examination, so that in Oh, okay. order to have a base subject in that, so I have opted for this arts subject. Okay. All the best. Thank you. Okay, Ravi. So do you know about World Health Organization? Yeah, I know about the World Health Organization. Tell me something about this World Health Organization. The World Health Organization is a specified agency of United Nations which are responsible for international public health, Okay. and their main goal are initiatives to provide maximum health to all the people around the world. Okay, what was the difference between bacteria and virus? Uh, Yes, I think this is a very perfect question for any biology student. Hmm? Adi, I think it's you. Adam is Bacteria can be spread from one person to another person, cannot be spread from one person to another person, whereas virus can be spread from one person to another person. okay. Thank you. So thank you, Adi. So Ravi, so what do you mean by cells? Cells are the basic compartment of our body, which contains smaller parts to to undergo a process that could make us live. So that's right, but not 100% right. Okay. So let's move to the another one. So tell me something about anyone. So tell me something about greenhouse effect. So what is greenhouse effect?
Sir, greenhouse, I'm not very sure about it, but greenhouse effect is the emitting of certain gases which causes an increase in the overall temperature around us. And it is currently also, there has been a lot of greenhouse effect which has also caused a lot of global warming. Okay, so thank you. Yes. Okay, so let's move to the Kaushik. So Kaushik, so what was your So what did you just say? The group is who was the health minister of India? Shri Mansukh Mandaviya. Okay, done. थोड़ा मैं यूनिक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि यस तुम लोगों को नहीं पता. ओके, ये तो आसान है. So who is the defense minister of India? Shri Rajnath. Shri Rajnath. Okay, so let's move to some CEOs. Okay, who is the CEO of SpaceX? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. सबको पता है. Okay. Okay, so who is the CEO of Flipkart? अब देखते हैं किसको पता है. Who is the CEO of Flipkart? Kalyan. What is it? Is Kalyan something? अरे सब गूगल करो अभी देखो अभी. Kalyan Krishnamurthy. Yes, Kalyan. Yeah, Kalyan Krishnamurthy. Okay, so who is the CEO of Google? Sundar Pichai. So Sundar Pichai. So who is the CEO of Microsoft? Okay, this इतना आसान क्वेश्चन. Bill. जल्दी मेरे को इसका आंसर चाहिए यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन. Who is the CEO of Microsoft? ना बोला तो Satya Nadella. सत्या नडेला. हाँ अभी आया मेरे को समझ में. ओके, थैंक यू. ओके, थोड़ा सा ये चलते हैं. सो हु इज द सीएम ऑफ कर्नाटका? सर क्या है, बसवराज बोमाई. यस. हु इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु? हु इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु? Stalin. MK Stalin. MK Stalin. Very good. So who is MK the Stalin. who is the chief minister of Bihar? Nitish Kumar. Yes. This one. Who is the chief minister of Uttar Pradesh? Shri Yogi Adityanath. Yeah. Yogi Adityanath. Okay, see. Okay. Yes, so that's all for my side. Actually, yes. So now our session is ended. Okay. सारा मैंने क्वेश्चन वगैरह सब कुछ पूछ लिया. अब किसी कोई क्वेश्चंस है तो मेरे से पूछो. यस सर, मेरे 10th में परसेंट कम थे, या तो वहाँ क्राइस्ट में इंटरव्यू में पूछेंगे तो नहीं? यस, वो डेफिनेटली पूछेंगे, वो किसी से भी पूछेंगे. इफ अगर तुम्हारा नंबर कम है, सो 10th और 12th में किसी में भी, सो दे विल आस्क वन वैलिड रीजन. सो व्हाई और जो